बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक दफ़ा फिर से लाइव में आ गया हूँ और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे केस लॉज और केस लॉज पढ़ के डिस्कस करके अपने लीगल रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। मीन्स के लीगल रजिस्टर को हम मेंटेन करेंगे। लास्ट जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, आपको याद होगा कि उसमें हमने क्या किया था। उसमें हमने मेरा जो लीगल रजिस्टर था उसको मैंने मेंटेन किया था। ये लाइव स्ट्रीमिंग करने का मकसद सिर्फ एक है और शेयर करने का भी मकसद सिर्फ एक है कि मुझसे कुछ दोस्तों ने ये मालूम किया था कमेंट्स से और वैसे भी कि आप अपना लीगल रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैंने चाहा कि लाइव स्ट्रीमिंग में ही अच्छा सा जैसे मैं करता हूँ वो लाइव दिखा के जो दोस्त देखना चाहते हैं उसको हेल्प उनको हेल्प हो जाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। सुबह मैं हाई कोर्ट गया हुआ था और हाई कोर्ट में मैंने एक केस देखा था। उसमें एक केस में लाहौर हाई कोर्ट का वो जज लाहौर हाई कोर्ट की वो जजमेंट थी। उसमें ये था कि अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी। उसमें क्या था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बने हुए हैं, उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उस उनसे अगर कोई नेग्लिजेंस होती है तो इस केस में उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कोई वो जो है वो उसको डिसाइड कर सकें, क्योंकि उनके पास उनके लिए अलग से कमीशन बनी हुई है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो कि सिंध में है, और पंजाब का है तो पंजाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वगैरह बनी हुई है। मीन्स की कमीशन वहाँ पे बनी हुई है, उनका भी एक खास एक्ट है। आज वो जजमेंट पढ़ के मुझे मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ और आज की ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसमें हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से कुछ रिसर्च करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ, सॉरी पाकिस्तान लॉ साइट की तरफ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कराची हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट के जजमेंट्स देख लेते हैं। अच्छा, जब आपने कराची हाई कोर्ट के या जजमेंट देखती हैं तो यहाँ पे कराची लिख देना है। सुप्रीम कोर्ट के देखने हैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिख देना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कराची हाई कोर्ट की कि कराची हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से क्या है। मीरपुर खास शुगर मिल्स लिमिटेड। अच्छा, ये कंपटीशन के हवाले से, कंपटीशन एक्ट शुगर अच्छा ये सेम है। सुबह ये हाई कोर्ट में मैं ये जजमेंट पढ़ रहा था, कुछ इसमें रह गया था, इसको कंटिन्यू करते हैं और अपना लीगल रजिस्टर जो है उसको मेंटेन करते हैं। सलमान खान, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा, ये जजमेंट से लेटेस्ट मैंने कौन सी लिखी थी? सिविल कोर्ट इज कॉम्पिटेंट फॉर सूट फॉर डैमेजेस, सी अच्छा सही। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सुबह एक जजमेंट मैंने पढ़ी थी जो कि मैंने अभी आपको बताया है। वो जजमेंट मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी शेयर की थी, अगर आपने देखी हो
मेरे YouTube चैनल पे भी मैंने शेयर की थी अभी, वहाँ से ही इसको अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है उसका साइटेशन। तो ये है कौन सा, PLT लाहौर आ गया, ठीक है जी। PLD 2000, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंज्यूमर कोर्ट वाज नॉट प्रॉपर फॉर्म फॉर adjudicating medical maladministration matters falling within competence of Punjab Healthcare Commission. The Consumer Court lacked jurisdiction to adjudicate upon a claim of medical malpractice, or at least could not proceed until its jurisdiction was triggered through a finding of the Commission. कहने का मकसद ये है कि देखें, मेडिकली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का काम है इलाज करना, लाजमी नहीं है कि वो हर उनके सलमान साहब, आपको मैंने रिप्लाई दिया है, कैसे हैं आप? तो डॉक्टर तो जो है इलाज करते हैं। अब डॉक्टर जिसका भी इलाज करे वो ठीक हो जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो डॉक्टर ने इलाज किया, जो वर्षा होते हैं उनका तो यही कहना होता है ना कि डॉक्टर ने निग्लिजेंस किया, हमारा जो बंदा था वो फोत हो गया डॉक्टर की निग्लिजेंस की वजह से। लेकिन ये बेसिकली निग्लिजेंस थी या नहीं थी, इसके लिए कमीशन बनी हुई है, हेल्थ केयर कमीशन, सिंध में भी है, पंजाब में भी है। बेसिकली उनका काम है कि वो देखते हैं कि क्या मेल प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई, क्या निग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई है। एक मिनट में इसको जो है फोकस पे रख दो, वरना मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। कहाँ है फोकस, 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 फोकस। स्टार्ट फोकस सेशन, जी हो गया। ठीक है जी, इसको हम मेंटेन कर लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट लैक्ड jurisdiction to adjudicate matters regarding relating maladministration, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये जजमेंटेशन के हवाले से इसको हम देख लेते हैं। इसमें ही इस केस का हवाला था जो कि मैंने अभी आपको बताया है, अपने लीगल रजिस्टर में मेंटेन जो कि मैंने किया था ना, वो इसी केस में हवाला था। सो वेयर इज इट, the definition of service as per section 2q of Sindh Consumer Protection Act can be split into different parts. The first and inclusive part defines a service to generally include the provisions of any kind of facilities, then especially envisaging the provisions of advice or assistance such as the provision of medical, legal or engineering services, whereas the exclusionary part omits the rendering of any service under a contract service or a service the essence of which is to deliver judgment by the court of law or arbitration. While it is not disputed that the petitioner is a healthcare service provider provided healthcare services to respondent number 1 as per section 2 subsection 16 and 17 of the Sindh Healthcare Commission Act. At the same time, it is manifest form of plain reading of section 2C and 2Q of the Sindh Consumer Protection Act that such healthcare service also fall
clearly fall within the broader genus of services and were apparently availed by respondent number 1 in the capacity of a consumer as per the case of respondent number 1 before the consumer court. असल में ये केस क्या है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने डॉक्टर के पास गए। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की हुई है। अब डॉक्टर हाईकोर्ट में आ गया है कि पहले तो उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में पिटिशंस दी, एप्लीकेशंस दी, वो डिसमिस हो गई, तो अब ये पिटिशन में आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं। अब डॉक्टर का वर्जन ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो नेग्लिजेंस या मेल एडमिनिस्ट्रेशन देखे ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। द रेलेवेंट फॉर्म फॉर सच मेल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट commission constituted under the act। ओके, तो यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है कि सर्विस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड है उसमें तो मेडिकली जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेडिकल सर्विसेज दिए जाते हैं, वो भी इंक्लूड है, मीन्स के कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन आ गई ना यहाँ पे। पर आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वेदर दिस thus falls to be determined from the rival contention advanced at the bar is whether the Sindh Healthcare Commission Act nonetheless overrides the Sindh Consumer Protection Act so as to divest the Consumer Court of jurisdiction to redress the grievance of a consumer who complains of deficiency in services provided by the medical practitioner, or alternatively whether such proceedings before the Consumer Court necessarily have to be processed by a finding of the Commission against the concerned practitioner, and if so, does a writ lies to prevent that forum from adjudicating upon a matter in either case. It is well settled that the exclusion of a jurisdiction of a court or tribunal can't be readily interfered. Exclusion of jurisdiction should be explicit. However, in a given case, jurisdiction may be excluded by necessary implication if there are clear, unambiguous indicia or undermining parameters in the statute governing the establishment, duties, functions and powers of the court or tribunal. As such, a writ of prohibition can't be granted except in a clear case of want of jurisdiction in the court whose action is sought to be prohibited, and to warrant issue of writ of prohibition, a petitioner must clearly show that an inferior court is said to proceed in a matter over which it has no jurisdiction. As per section 3 of Sindh Consumer Protection Act, Sindh Consumer Protection Act, section 3 कहाँ पे है? The provisions of this act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. As per section 3 of the Consumer Protection Act, the provisions of that statute are in addition to and not in derogation to any other provision of any other law for the time being in force, having due regard to the scheme of the Sindh Consumer Protection Act and purpose sought to be achieved to protect the interest of consumers. The provisions thereof are to be interpreted broadly, positively and purposefully in that context so as to give meaning and effect to the jurisdiction, particularly when section 3 thereof seeks to provide a remedy in addition to other remedies provided under other statutes, unless there is a clear bar. Looking to the contentions advanced on behalf of petitioner, while it may appear at first blush that a complaint against medical practitioner before a consumer court ought to be stayed in view of section 29 of Sindh Healthcare Commission Act for the words not in derogation of provisions of any other law for time being in force,
in Section 3 of Sin Consumer Protection Act to be given proper meaning and effect on proper introspection, it transpires that such a contention is not well founded. अच्छा, section Sindh Consumer, sorry, Sindh Medical, Sindh Healthcare Commission Act. This is the act, and section 29 जी क्या कहता है? Immunity. No suit, prosecution or other proceedings, legal proceedings relating to the provision of healthcare service shall lie against a healthcare service provider except under this act. मीन्स कि यह इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट सिविल सूट, लीगल प्रोसिक्यूशन वगैरह, लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती। इस हवाले से देखते हैं कोर्ट क्या हेल्ड करती है। Furthermore, it falls to be considered that as per Section 4 of Healthcare Commission Act, the powers of Commission don't extend to awarding compensation or damages, and at best extend to the imposition of fine, and that too subject to the limit prescribed through Section 28. अच्छा, देखते हैं 28 कितनी फाइन दे सकते हैं? 500,000 रुपीज़, मीन्स के 5 लाख तक है ना। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 4 क्या कहता है जी? सेक्शन 4 बताइए। इसमें फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कमीशन, मेंटेन, मॉनिटर, ऑपरेट। अच्छा, जब आप केस पढ़ते हैं, मैंने लास्ट अपने लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था कि जब भी आप केस पढ़ें उसमें जो भी प्रोविजन ऑफ द लॉ लिखा हो वो लाजमन आपने देखना है, क्योंकि जब आप वो देखते हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ आप देखते हैं, तो फिर आपको इजीली वो याद भी रह जाते हैं। भले आपको वो प्रोविजन ऑलरेडी पता हो, फिर भी आपने देखना है एक बार। ठीक है जी। इम्पोज एंड कलेक्ट पेनल्टीज। हाँ, यहाँ पे जो कमीशन के पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, इसमें कोर्ट कह रही है कि कोई उनके पास ऐसा पावर नहीं है कि वो कंपनसेशन दे सकें। Such an assessment is fortified by wording of Section 31 subsection 1 of Healthcare Commission Act, which sets out the scope for an appeal against an order or decision of Commission as follows. A person who is aggrieved by refusal of Commission to issue or renew a license, decision of the Commission to suspend or revoke a license, order of closing down of a healthcare establishment or making improvements in the healthcare establishment, order relating to equipments, apparatus, appliances or other things at a healthcare establishment, or imposition of fine by the Commission may within 30 days from the date of communication of order of Commission prefer an appeal in writing to the district and session judge. In our view, an outsider of jurisdiction in terms of such a provision in the special law can at best operate to the extent of subject coextensive to the powers of the forum under that enactment, and the scope of Section 29 has to be construed accordingly with reference to the powers of the Commission. As far the Commissioner's reliance on the judgment of Dr. Riaz's case, suffice it is to say that same is not binding on us, and we are constrained to say with utmost respect that in view of the foregoing discussion, we find ourselves unable to concur with the assessment in that matter. And when otherwise, the sequence of parallel legislation enacted in Pakistan, in the Punjab, is the mirror image of that in the province, with the consumer protection law having proceeded that constituting the healthcare commission. अच्छा, यह कह रहे हैं कि जो
डॉक्टर रियाज वाला केस है ना, जो ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी लिखा था, कुछ देर पहले रखा था, और मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि पंजाब ने कहा है कि कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वो केस हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, और हम इस मामले को डिफरेंटली इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे व्यू में उससे बेहतर ये है कि सेक्शन 29 जो है उसको ऐसा इंटरप्रेट किया जाए कि उनमें सारी चीज़ें आ जाएं। देखें, सेक्शन 29 को ये इंटरप्रेट किया जाए कि कोई सूट फाइल ही नहीं हो सकता, तो फिर तो डैमेजेस और कंपनसेशन का भी सूट फाइल नहीं हो सकता। ठीक है जी। Turning to the aspect of whether the consumer court is an appropriate form to determine whether medical malpractice or negligence has occurred, it is well accepted that for a claim of clinical negligence to be established, a medical practitioner has to be found to have breached a duty of care to the patient, who in return suffers injury as a result of that breach. Demonstrating that a doctor has breached the duty of care is the first major burden in any negligence case, but this is not always clear cut. There's certainly scope for genuine differences of opinion when it comes to the diagnosis and treatment. The petitioner contention is that the consumer protection lacks necessary expertise, and it is the commission that is to make an assessment in this regard in view of the standards envisaged under the Sindh Healthcare Commission Act. Hence, for the jurisdiction of consumer protection to be attracted, there has to be a prior determination of culpability on the part of practitioner by that quarter. Section 14 of Sindh Consumer Protection Act was cited to support the point. तो सेक्शन 14 क्या कहता है? सॉरी, ये तो हो गया बुकमार्क। सेक्शन 14 standard of provision of services. Where the standard of provision of services regulated by a special law, provision of shall be deemed to be the standard laid down by such a special law. अच्छा जी। Needless to say, liability claims for the defective services as envisaged under Section 13 of Sindh Consumer Protection Act would similarly entail a breach of duty to be determined with reference to the parameters laid down in Section 14. A provider of services shall be liable to a consumer for damages approximately caused by the provisions of service that have caused damage. ठीक है जी, आगे चलते हैं। Where the quantum of damages, if any, would be circumscribed by the restriction imposed in terms of Section 15 thereof. Section 15 में फिर क्या है? Restriction where the consumer has not suffered any damage except a return of consideration or the part thereof and the costs. Okay. Indeed, Section 14 merely restates a well-entrenched common law principle laid down in a case wherein his advice to the jury, Mr. Justice, stated, where some special skill is exercised, the test for negligence is not the test of the man on the cliff farm omnibus, because he has not got this special skill. The test is a standard ordinary skilled man exercising or professing to have that special skill. On the word, the child had 2 episodes in which he went pale and had trouble breathing. A senior register were notified on both
The boy stopped breathing and suffered cardiac arrest, leading to severe brain damage and later death. His mother later sued the health authority for clinical negligence, claiming that her son been intubated after the second episode, he would have survived. The health authority admitted breach of duty in registrar's failure to attend the child, but it disputed the claim that this breach led to Patrick's death, as the registrar would have not have attributed the boy, intubated the boy. It was claimed that this decision would have been consistent with the respective body of medical opinion, thus supported by the case for medical expert stated any competent self defense. And the view of organ. अच्छा, तो इन्होंने पिटिशन डिसमिस कर दी कि कंज्यूमर कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है मेडिकल नेग्लिजेंस केस में. उसको हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं. कंज्यूमर मेडिकल court also has jurisdiction to adjudicate matters relating maladministration and medical negligence. EDC. It कौन सी जजमेंट है? PLD 2022 कराची और 430 कराची लिखे. कहाँ गया? चलें जी, सन लिख देते हैं. सन, ठीक है जी. एक मिनट. 429 Russian Act Code. ओके, चलिए जी आगे चलते हैं. एक मिनट. डॉक्टर मोहम्मद आसिफ वर्सेस कमरुन्निसा आंकड़ों. किसकी डेट? बल्कि सेम ही जजमेंट है. 430 कोलगेट पाल्मोलिव वर्सेस राय ताहिर इकबाल.
सुप्रीम कोर्ट। पाक सुजुकी मोटर्स, ये तो मैंने पढ़ी हुई है। 934। हाँ ये मैंने पढ़ी हुई है, ये है ना। देखें, जो पढ़ी होती है वो याद आ जाती है। Certain law that material facts shall be in pleading and that be proved through evidence. Limitation in case of consumer claim under Punjab Consumer Protection Act. पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट में लिमिटेशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो यहाँ पे लिखी हुई है इस केस में। ठीक है जी, ये मेरी पढ़ी हुई है। आगे चलते हैं। ये भी सेम ही जजमेंट है, लग तो सेम ही रही है। हाँ सेम ही है। आगे चलते हैं। भारत टेलीकॉम वर्सेस पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ये और कानून में है। ठीक है जी, इसको स्टॉप करते हैं, कुछ और देख लेते हैं, यहाँ पे रिसर्च कर लेते हैं इसके अलावा कौन सा मैटर है। एक मिनट। मेंटेनेंस के हवाले से देख लेते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के हवाले से ऑलरेडी मैंने कुछ रिसर्च की हुई है, तो उसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जी, कौन सी तारीख है? 18/3/2024। मेंटेनेंस, एक मिनट में। एजुकेशन का अच्छा वगैरह के हवाले से देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन, grandfather responsibility. Suit filed by petitioner, means the mother of two minor, were decreed by the trial court by। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक। फिर से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कमेंट्स देखे। सलमान साहब, थैंक यू सो मच। आपको जवाब दे दिया है, मेरे ख्याल से आपने लेट से सुना होगा। बिग फैन ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू जी। कंटिन्यू करते हैं आप अपने टॉपिक को। मेंटेनेंस के हवाले से, बच्चों की जो मेंटेनेंस होती है उसमें कोर्ट्स का जो लेटेस्ट व्यू क्या है उसको हम देख लेते हैं। कस्टडी ऑफ माइनर्स, फाइनेंशियल बीइंग of father better than mothers. Okay. ये किसकी जजमेंट है? सैयद साहब की जजमेंट है, बैतुल माल एक्ट। इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली गैर मुस्लिम के हवाले से है। राजा राम वर्सेस शिरमाती रीता। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सीपी है। अच्छा, 199 में through instant constitution the petitioners have assailed concurrent findings delivered by learned family judge Jakmabad and family suit number, wherein he has decreed the suit filed by respondent number 1 to 3. Those are, that is, Shrimati Rita versus Rajaram, directing the defendant, that is the petitioner number 1, to pay the maintenance to the plaintiff respondent number 2 and 3 at the rate of 3,000 each, with 10% increase per annum. ठीक है जी। From August 2017 till their marriage, with further direction to hand over the gold ornaments to the plaintiff or to pay the market value of gold ornaments to her by judgment dated the same on being challenged before the learned sessions judge Jakmabad in the family appeal, endorsed the findings of the learned family judge while dismissing such appeal. मतलब कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स की भी वापसी की बात हुई है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये सूट फाइल हुआ। सूट में क्या हुआ कि लर्नड जो ट्रायल कोर्ट है, फैमिली जज थे जकमाबाद के, उन्होंने पिटिशनर को ये डायरेक्शन दी कि वो जो बच्चे हैं दो माइनर, उनको 3,000 पर मंथ मेंटेनेंस देगा विथ 10% पर एनम इंक्रीज। ठीक है जी, इंक्रीमेंट टिल देयर मैरिज। जब तक उनकी शादी नहीं होती बच्चों की, तब तक वो प्रोवाइड करता रहेगा मेंटेनेंस। और इसके अलावा जो वाइफ थी, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 है इस केस में, उनको गोल्ड ऑर्नामेंट्स वापस किए जाएं या फिर उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो वापस कर दी जाए। ठीक है जी। Precisely, the facts of the case are that the plaintiff, that is the respondent number 1, Rita, married to Ravi Kumar, son of in 2012. 2012 में इनकी शादी हुई, and from such wedlock she has 2 babies, namely Jessica and Senika. The said Ravi Kumar committed suicide. अच्छा, 2017 में उसने सुसाइड की। 2012 में इनकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, जेसिका और सनिका। It is further averred that after death of her husband, the respondent number 1, plaintiff, was driven out of her house of her late husband by the respondent number 1 and 2, snatching her all dowry articles including gold ornaments. मीन्स इनकी शादी हुई और उसके बाद जब हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया तो फिर इनको घर से निकाला गया विथ ऑल दी डोबरी आर्टिकल्स में उन्होंने स्नैच कर लिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं।
Pursuant to summons issued by the learned trial court, petitioner number 1 and 2 filed their joint written statement denying the assertions of the defendant number 1. However, the relationship between the parties was not disputed by the petitioners. From pleading of the parties, the learned trial court framed the issues and laid their evidence. Respondent number 1, Shri Mati Rita, in support of her case, examined herself and her brother, whereas the petitioner number 1 examined himself. Ultimately, after closing sight by the both of parties and hearing their counsel, the learned trial court decreed the suit of the plaintiff to the extent of grant of maintenance to respondent number 2 and 3 at the rate of 3,000 per month, with increase of 10% per annum, as well as return of gold ornaments to the Srimati Rita, or paying her its market value by the petitioner number 1. However, said Srimati Rita simply withdrew the claim of dauber by filing such a statement and further demanded maintenance of the minor babies by filing such. The record further reveals that against judgment and decree of the learned trial court, the petitioner filed family appeal before the learned district judge Jakmabad, which too was dismissed, hence the instant constitution. The record reflected that on failure of the petitioner number 1 to comply with direction of passed in judgment and decree in execution proceedings, the petitioner was taken into custody by learned trial court during pendency of instant constitutional petition before this court, and subsequently the petitioner number 1 was released on execution of personal bond by the order dated 2021 passed by this court. अच्छा, तो मीन्स के जब डिक्री हुई और डिक्री की एग्जीक्यूशन के दौरान इन्होंने डिक्री को फॉलो नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी जो पिटिशन नंबर 1 है वो अरेस्ट भी हो चुके हैं, मीन्स के उनको कस्टडी में भी लिया जा चुका था, और उसके बाद इस कोर्ट मीन्स सिंध हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से और पर्सनल बॉन्ड की एग्जीक्यूशन से वो बाहर रहे हैं. Learned counsel for petitioners has agitated only 2 grounds. Firstly, that the family court was not competent and had jurisdiction to entertain such suits of Hindu wife for maintenance. Secondly, that as per Hindu personal law, the respondent number 2 and 3 are not entitled to claim maintenance from the grandfather, that is the petitioner number 1. Hence, these points were not considered by the learned trial court as well as appellate court. The suit of respondent number 2 and 3 decided in accordance with Hindu law, which was upheld by learned appellate court. यहाँ पे मुस्लिम लॉ होना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डेंस डिसाइड हुए थे. बहरहाल आगे चलते हैं. Conversely, the learned counsel for respondent argued that the relationship between the parties is not disputed and that the orders passed by learned court below well reason don't call for any interference by this court. Therefore, the instant petition filed by the petitioner may be dismissed. हमारे जो मुस्लिम रिलेशनशिप्स हैं वो तो आपको मालूम है, इसमें मैंने लेटेस्ट एक वीडियो भी बनाई थी कि उसमें क्या है कि सबसे पहले बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो खर्चा दे. जब बाप की वफात हो जाती है या वो कमाने के लायक नहीं है, मीन्स के कोई उनको ऐसी बीमारी हो गई या किसी भी वजह से वो कमा नहीं सकता, तो फिर वो जिम्मेदारी आ जाती है दादा के ऊपर. ये मुस्लिम लॉ के तहत है. अब हिंदू लॉ में क्या है वो हम इसमें देखते हैं कि इस पर क्या डिसाइड हुआ है. देखें यहाँ पे ये जो सूट डिसाइड हुआ वो इन अकॉर्डेंस विद द मुस्लिम लॉ हुआ है, जबकि पार्टीज दोनों जो हैं वो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है. ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं. So far as first contention of learned counsel for the petitioner is concerned, suffice it to say that the learned appellate court has already taken into consideration point of jurisdiction of learned trial court and has rightly observed that the case relating to marriage and family court of none
Muslims, including Hindus, not excluded from ambit of Section 5 of West Pakistan Family Court Act 1964, and said act doesn't come into conflict with Hindu married women's right to separate residence and maintenance Act 1946. इस एक्ट को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फैमिली कोर्ट एक्ट। अब देखें, फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 5 मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे देखने के लिए खोलना पड़ रहा है कि उसको एक बार रिवाइज हम कर दें। ठीक है जी, इससे याद हो जाते हैं सेक्शंस। हिंदू मैरिड वुमन a right to separate residence and maintenance act 1964। अच्छा, ये है, इसमें क्या है, ग्राउंड्स फॉर क्लेमिंग सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इज गिल्टी ऑफ, ठीक है, amount when allowing a claim for separate the court shall determine amount to be paid by husband to wife, therefore and so doing have husband means। अच्छा, इसमें क्या है जी, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, अब ओपन होगा। Subject to the provisions of Muslim Family Law Ordinance and the Conciliation Court Ordinance, the Family Court shall have the exclusive jurisdiction to entertain, hear or adjudicate upon matters specified in the schedule। ठीक है जी। And in this regard, the learned trial court, appellant court has placed its reliance upon the case of PLD 19। अच्छा, ये अपने पास नोट कर लेते हैं, PLD 1985 कराची 362। ठीक है जी। The second contention of the learned counsel for petitioners is to effect that as per Hindu personal law, the respondent are not entitled to claim grandfather is concerned. It has to be observed that no doubt, according to Section 20 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, PDF। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 20। सही, आगे चलते हैं। ये सेम लिखे, while as per section 22 of grandchildren come within the definition of dependent of grandfather, however, sure, dependent defines is or her father for the purpose of dependence means the following relatives of the deceased: his or her father, his or her mother, his widowed daughter, any widow of and his son or son of his predeceased son, so long as she doesn't remarry,
सही. However, so far as the maintenance concerned, subsection 4 of section 21, that is 4, this one, Sahi, articulates that grandchild is unable to obtain maintenance in the case of grandson from his father or mother estates, and in the case of great grandson from the estate of his father or mother or father's father or father's mother, and that the heirs of deceased Hindu are bound to maintain the dependence of the deceased out of the estate inherited by them from the deceased. In the instant suit case, admittedly the deceased father of the children didn't leave any estate enabling them to have maintenance from the estate left by him, while as per section 547 of Principles of Hindu Law, maintenance by Mullah Hindu law, a grandfather is under no personal obligation to maintain his grandson or granddaughters. कहने का मकसद ये है कि जैसा कि हमारे मुस्लिम लॉ में ये है कि ग्रांड फादर जो है वो अंडर ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन हिज ग्रांड चिल्ड्रन इन सम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, बट in Hindu law there is no such obligation of grandfather to maintain his grandson if there is no estate left by the son by his son. मीन्स के अगर बच्चों के वालिद की तरफ से कोई जायदाद वगैरह छोड़ी गई है तो फिर ग्रैंडफादर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस जायदाद से उसकी मेंटेनेंस दे. लेकिन अगर जायदाद उसके वालिद साहब ने नहीं छोड़ी तो फिर दादा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हिंदू लॉ में. आगे पर देखते हैं. Furthermore, learned counsel for the petitioners contended that the petitioner of one is an aged and infirm person having no source of income in any event. He doesn't have an own residence, but he lives in a mandir, dharamshala, and that this fact can be affirmed from the report submitted earlier before the learned trial court and execution. A very poor person having no source of income doesn't have this his own son, whereas mother of minor being widow and old household also to have no source of income, and both of them are not in position to maintain the mind. In this segment would be only the state, which include the federal and provincial and its departments, Pakistan Baitul Mal and social welfare department, zakat and leisure department, who would provide assistance to poor and needy persons under the different heads on regular basis in order to accommodate them in respect of at least day-to-day expenses. These departments of the federation and province are supposed to provide assistance to the needy, the federation to the needy person, the indigent and the poor, particularly orphans, widows, handicapped and disabled person. And the Article 35 of the Constitution of Pakistan, the state is responsible to protect the family, the mother and the child. The federal and provincial government are under constitutional obligation to establish institute at large scale to regulate the affairs of unattended children in light of mandate of Holy Quran and Sunnah of Holy Prophet, peace be upon him. Whereas Article 37 of the Constitution puts the responsibility upon the state to promote the social justice and to eradicate social evils, and in view of Article 38 of the Constitution, the promotion of social and economic well-being of the people is again the duty of the state. In the case of Sohail Muhammad Shees Farooq versus Musmat Minza Rumana, it was held that in family matters it is the social justice and not the legal justice which is to be advanced, and such is the also obligation of a state under the policy principles of policy as provided in the Constitution, which charges the executive to advance social justice and eradicate evil and protect weakest society section of the society. In wake of abuse situation, in order to
ascertain as to what are the policies and plan for the provision of assistance to poor and needy through effort. The Deputy Commissioner Jakmabad was called in court, and on his behalf, the Assistant Commissioner Jakmabad put his appearance and submitted that no fund of financial assistance have been placed under any heat by the government at disposal of the office of Deputy Commissioner Jakmabad. He, however, referring to the provisions of Baitul Mal Act 1991, submitted that the Penal Board would be in position to provide financial assistance to respondent minor. As already observed, it is the state who has to provide basic necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical relief for all citizens, irrespective of their sex, caste, creed or race, who are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of sickness or unemployment or circumstances beyond their control. It is also the state to protect the family, the mother, child, and to promote the social and economical well-being of the people. And in this context, the government of Pakistan, besides other department, has established Pakistan Baitul Mal for providing funds, assistance to destitute and needy widows, orphans, invalid, infirm, and such other persons, thereby save them from the hardship, suffering, and to enable them to lead a comfortable, honorable life in the society. A bare pursuit of Section 4A of the Pakistan Baitul Mal reflects that the money in Baitul Mal for certain purposes, including financial assistance to needy widows, orphans, infirm, it would be to produce a charge by the board, and money in the Baitul Mal should be provided for. It is related that since the grandfather of minor is stated to be very poor, having no source of income and house, while mother of the minor being widow and household lady is also stated to be have no source of income. As such, both of them are in not in a position to maintain this the minor children. In these circumstances, it would be only the state, which includes the federal and provincial government, who would provide financial assistance to the minor on a regular basis in order to accommodate them in respect of their at least day-to-day expenses and to save them from hardship and suffering, enabling them to lead a comfortable, honorable life in the society. Accordingly, the Pakistan Baitul Mal government of Pakistan is directed to register both minor, namely Jessica and Sanika, daughters of Ravi Kumar, as regular beneficiaries for Pakistan Baitul Mal, to pay 10,000 to each minor on monthly basis without fail continuously till their marriage, with annual increase of 10% commencing from December 2022. So their mother Shimrati Rita Ram of Rajkumar, wife of Rajkumar, daughter of Vishandas. The compliance report of payment of minors to be furnished before the additional registrar of this court on or before 10th of calendar month. Simultaneously, the secretaries to the government of Pakistan, the government of Sindh, Women Development Department and Minorities Affairs Department, government of Sindh are also directed to take up the case and consider widow ladies on monthly for their regular financial assistance on monthly basis, which would be in addition to the maintenance of by Pakistan Baitul Mal. It is also expected that the President of Hindu Panchayat Jakmabad would also be kind enough to extend financial assistance to the widow lady Rita and of minor. Office is directed to send copies of this order to all the concerned for information and compliance. The instant disposal of. इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं. इस केस में क्या हुआ, सारा मैंने आपको डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, आपके सामने मैंने पढ़ा है, लेकिन एक बार रिव्यू करने का मकसद ये है कि मुझे भी ज़रा ये याद हो जाए. ठीक है जी. तो इसमें हुआ कि शादी हुई 2012 में. 2017 में जो हस्बैंड था उसने खुदकशी कर ली. उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद
हस्बैंड ने तो खुदकुशी कर ली, बच्चों के मेंटेनेंस कौन देगा? इसके लिए जो बच्चों की माँ है वो कोर्ट में गई अगेंस्ट दी दादा, के दादा से वो मेंटेनेंस खर्चा ले बच्चों का। ट्रायल कोर्ट ने 3,000 खर्चा वहाँ पे रख दिया कि 3,000 जो खर्चा है वो देगा, दादा देगा बच्चों को, हर बच्चे को 3,000 दादा देगा। दादा ने फैमिली कोर्ट की उस डिक्री के अगेंस्ट सेशन कोर्ट मीन्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल की। अपील में क्या हुआ कि अपील डिसमिस हो गई। उसके बाद आपको पता है कि अपील होती है, उसके बाद कोई अपील सेशन कोर्ट में होती है तो सेशन कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, आप रिट में जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर में आ गए रिट में। यहाँ पे दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट तो आपने केस से ही आपने सुन ली है। हेल्ड ये हुआ कि क्योंकि बच्चों का जो दादा है वो भी गरीब है, बच्चों की जो माँ है वो भी गरीब है, बच्चों को तो खर्चा चाहिए, तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो भी बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करें, जो माँ है उनको प्रोटेक्ट करें। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, फैमिलीज को प्रोटेक्ट करे। तो स्टेट ने कुछ डिपार्टमेंट्स भी बनाए हुए हैं, बैतुल माल डिपार्टमेंट, पाकिस्तान बैतुल माल, ज़कात और ओशर डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। तो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद अली सत्तो साहब ने जो बैतुल माल डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान बैतुल माल, उनको डायरेक्शन दिया कि बच्चों को जो कि जिनको ट्रायल कोर्ट ने 3,000 का खर्चा दिया था, उनको 10,000 का खर्चा दिया जाए, एक एक बच्चे को 10,000 का खर्चा दिया जाए। और उसके अलावा सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, माइनॉरिटीज़ अफेयर्स वगैरह के, उनको भी डायरेक्शन दी गई कि बच्चों को और बच्चों की माँ को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए ताकि वो ऑनरेबल लाइफ ज़िंदगी, ऑनरेबल ज़िंदगी गुजार सकें, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। ठीक है जी, ये इस केस में हेल्ड हुआ है। इसको हम अपने लीगल रजिस्टर में लिख लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें भी ऐसे प्रीपोजिशंस का मीन्स के ऐसे ही केस की इस ही केस का सामना हो सकता है। तो इस केस में, उस केस में ये जजमेंट जो है वो कारामद होगी। लिख लेते हैं मेंटेनेंस। और जो हमें देख रहे हैं वो काइंडली ये बताएं कि जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है इससे कोई आपको फ़ायदा हुआ है, कोई सीखने को मिल रहा है, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे भी मालूम तो हो कि कोई कोई तो सीख रहा है। मेंटेनेंस, सेकेंडली ग्रैंडफादर, मदर, वेरी पुअर, छोटे छोटे वर्ड्स पे लिखता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। वेरी पुअर, बैतुल माल, बैतुल माल,
10,000 each minor monthly as maintenance। ठीक है जी। PLD कौन सी जजमेंट है? 2023 सुप्रीम कोर्ट 214 सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिंध 214। ठीक है जी, इसको हमने मेंटेन कर लिया है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग को। ठीक है जी, यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करते हैं। इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ से ये बंद होता है, मैं आपको बंद भी करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये लॉग आउट हो जाता है। ठीक है जी, लॉग आउट करके इनको बंद करते हैं। एक बार लास्ट में मैं थोड़ा अपना लीगल रजिस्टर को देख लूँ। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूटी ऑफ आईओ टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम ऑल पॉसिबल स्पॉट्स बाय कीपिंग Section 41 of TPA conditions for taking its benefit tribal age, and there is no legal concept of parity. The grandfather responsibility to maintain his grandchildren। 2010 की जजमेंट है देखिए। So he grandchildren aged 78 responsible liable to provide maintenance। Crown can do no wrong, can't be equated to government of Pakistan। Even lower court can issue directions against government to perform duties। Civil court is competent to suit for। सही। ठीक है जी, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।